हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आज मैं इसकी पोल खोलूंगी कि हमें इसमें क्या करना है, कैसे होता है, किस टाइप की होती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम कवर करेंगे meaning, types, and NBFCs versus banks. So first of all, let me tell you NBFIs. So नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? ये एक हिट्रोजिनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ है ताकि वो अलग अलग सेगमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके। इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स। दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दीज आर non banking financial institution. They are working to promote companies expansion, infrastructure building, how residential accommodation, and for certain purposes which we will discuss in upcoming slides. Here you can see the types of non-banking financial institutions. This is the framework provided by RBI under which it has been categorized into two types. First is non-banking financial companies and second type is all India financial institutions. Non-banking financial companies. Non-banking financial companies are further segregated into insurance companies, stock exchange, housing finance companies, microfinance companies, mutual benefit finance companies, mutual benefit companies, miscellaneous NBFCs. तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये ओवरऑल आपको चार्ट डिपिक्ट कर रहा है that which type of NBFIs we have in India. In bracket, whatever regulatory institution is provided, it is the giving the indication for the financial regulatory authority for the specific type of NBFIs. Okay, so now moving towards first category, that is all India financial institution. All India financial institution involves the financial regulatory bodies और refinance agencies. इनका काम क्या होता है कि जो बैंक्स है, NBFCs है, उनको रेगुलेट करना so that they can have a proper circulation of money in the economy. And they are also providing refinance. What do we mean by this refinance? Means they are providing loans to the lending institutions, like they are providing loans to the banks and non-banking financial institution to further distribute it to the general public. In India now we have four types of all India financial institution which are regulating different kind of sectors. Like first is Export Import Bank of India. They are regulating and supervising export import related activities, and they also provide help and policy formulation in this respect. Next is National Bank for Agriculture and Rural Development. In short, we call it as NABARD. NABARD is assisting, supervising, regulating the banks for the development of agriculture area and the rural area, and its development, overall development of the rural area and agriculture sector. Third one is SIDIB. SIDBI is a small industrial development bank of India. It is a regulatory and refinance agency who for small scale industrial. They are catering the small scale industry financial needs.
Okay, so in the same way, NABARD, what NABARD is doing, NABARD is providing loans to the banks and NBFCs for agriculture purpose, for rural development purpose. In the same way, we have fourth one, that is National Housing Bank. National Housing Bank is providing refinance, is acting as a refinance agency or providing loans to the banks with for the residential purposes. Okay, so now going toward the next, that is NBFCs. Now under NBFI, we firstly have discussed about the all India financial institution, and the second broad category was non-banking financial companies that we are now going to discuss. So non-banking financial companies, these are companies which are registered under Companies Act 1956 or 2013, and non-banking financial companies in India, all these NBFCs are required to register under RBI Act, under the section 45 AI of RBI Act 1934. So now what is the difference between bank and NBFC? Little bit we'll discuss about here, and the whole difference will later on we will be discussing. And the NBFCs are those financial institution which does not have full banking license, but they perform certain function similar to the bank. Okay, so this is about the NBFC. So they are doing similar functions to the banks, but they do not have full banking license. So they can there are different type of NBFCs. Certain can accept deposit and certain are prohibited to accept deposit. So but whatsoever NBFCs are accepting deposit, they cannot accept demand deposit, means current or saving deposit. They can only accept fixed deposit. So first, NBFCs can be of two types. First is deposit accepting and non-deposit accepting. So deposit accepting can be only accept those fixed deposit which have a maturity period of 1 to 5 year, minimum 1, maximum 5. Now when we are calling about the deposit, it is important to know about that deposit is insured by DICGC. Like in bank, if we deposit our amount into bank, our saving into bank, that will be covered under DICGC. DICGC is Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. If a bank go bankrupt, in such a way, the DICGC help us to recover some amount. So they are providing insurance for deposit into the bank. बट एनबीएफसीज में आपका जो डिपॉजिट है उसको कोई भी डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी. और लास्ट पॉइंट इसमें कि एनबीएफसीज कैन नॉट रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआईज, ओके, except NRO account. Now going toward next, that is we are here discussing about the NBFCs on the basis of their activities. Like there are certain NBFCs which are performing different business, like financing, loan providing, acquisition of shares, debentures, bonds. They can also assist in insurance work. They can do hire purchase business. They can be into chit fund business. They can be into mutual benefit company or nidhis. But NBFCs are prohibited to do these some activity, that is agriculture operation, industrial activity, sale and purchase of goods, providing services. So in lump sum हम कह सकते हैं कि NBFCs ये काम कर सकती हैं: लोन देने का, शेयर और डिबेंचर बाय सेल करने का,
हायर परचेज, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, चिट फंड का, निधि का। लेकिन एनबीएफसीज ये काम नहीं कर सकते। सो आई थिंक द पॉइंट इज लिटिल बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एनबीएफसीज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। Going toward next, there are some examples of NBFCs like Power Finance Corporation, Shri Ram Transport Finance Companies. Bajaj Finance is the largest one NBFCs in India. Now here we will let us discuss now the different types of NBFCs on the basis of their activities. Here are asset finance companies, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे क्या हमारे एनबीएफसी हैं। देखो जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, फैक्टर्स हैं, चिट फंड्स हैं, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी जिन्हें हम निधिस कहते हैं, ये सारी की सारी हैं एनबीएफसी। ओके, इन्हें अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनका हर एक का क्या एक्टिविटी है, किस तरह के फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज लाइक we are very much familiar with the LIC and GIC, like Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation. What they are doing, they are offering the risk management. Like there is one party called insurer and another party called insured. Insurer means the insurance company who is providing insurance, and insured means the policy holder who have availed the insurance. So in the case of any happening of any particular event, the insurer or insurance company will make the loss good. They will compensate to the policy holder. Policy holder means insured, जिन्होंने इंश्योरेंस ली है। तो ये काम जो करती है इंश्योरेंस कंपनी, वो भी हमारी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, as well as in the around the world we have largest stock exchange, that is New York Stock Exchange in America. Except that we have further Shanghai Stock Exchange. So all these stock exchange are NBFCs and they facilitate in trading of equity shares and other stocks after being listed into them. So there is some structural way, like companies issue their shares, debentures and other security for first time in primary market. After they are issued first time, they are being dealt or traded in the stock exchange after being listed. So जो भी कंपनीज अपने शेयर को लिस्ट कराएगी स्टॉक एक्सचेंज में, उनके उस स्टॉक एक्सचेंज में उनकी शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, सेल एंड परचेस होगी। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स को फैसिलिटेट करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेस करने का, तो वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी क्या है, एनबीएफसी। नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज। लाइक स्टॉक एक्सचेंज तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बायर और सेलर को, और या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी क्या, इंडिविजुअल क्लाइंट को उनके मैच प्रोवाइड करता है। सपोज आई वांट टू बाय सम शेयर्स, सम डिबेंचर, एनी अदर सिक्योरिटी, सो stock broker have get the request of selling from some other person, so they will provide a match between the individual client. मैं बाय करना चाहती हूँ और दूसरा बेचना चाहता है, तो ब्रोकर के पास दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं, तो वो उनका आपस में मैच कराएगा। तो इंडिविजुअल क्लाइंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, तो कि स्टॉक एक्सचेंज के काम को फर्दर स्मूथ वे से करने के लिए एक फंक्शनैलिटी का रोल प्रोवाइड करती है। और इंडिया में जीरोधा, ग्रो,
एंजल वन, अपस्टॉक, आईसीआईसी डायरेक्ट और कई सारी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, बट ये हमारी टॉप मोस्ट कंपनीज जो है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है। तो ये भी किस कैटेगरी में आती है? एनबीएफसी। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या पर्पस है? सो एज द नेम इज सजेस्टिंग दैट दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर buying residential accommodation or for purchasing land, for constructing house. So there are some, these are important role played by housing finance companies, and they are regulated by national housing banks. Okay, now coming toward, like in India, HDFC is Housing Development Finance Corporation. So they are basically the primary subsidiary of the HDFC, which is basically a housing finance company. Okay, so they are, all housing finance companies are supervised by National Housing Bank. Now coming to our next NBFC, that is asset finance company. Now if you talk about asset finance company, asset finance companies are providing you loans for buying any other type of asset other than residential house, like you want to buy car, laptop, refrigerator, AC, any other personal to commercial goods, you can get it, you can get it purchased through some you can purchase it through the help of asset finance company, which can provide you, if you do not have the full buying amount, that way they help you assist in getting your good purchased by providing your finance. Okay, so here they are come up in the form of equipment leasing companies and hire purchase companies. अगर आप कोई भी लैपटॉप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो आपकी जो कुछ आप इंस्टॉलमेंट पे कर दो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, वो हम दैट विल बी रिकवर्ड इन द इंस्टॉलमेंट्स। सो उन्हें सपोर्ट कौन करता है? दैट इज हायर परचेज कंपनीज। ठीक है। देन कमिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज का क्या काम है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट जिनका पर्पस ये है कि वो अपना अमाउंट, उनकी असेट बेसिकली उनका जितना भी कैपिटल होती है वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, और उनका जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी, देयर हैव दिस स्पेसिफिक मेन पर्पस। तो जैसे कि हमारे पास म्यूचुअल फंड है, वो क्या करते हैं? लार्ज कैटेगरी ऑफ स्कैटर्ड कस्टमर जो भी है, इंडिविजुअल्स हैं, उनका पैसा लेके small small saving they will accept from the last scattered individual and then pool into the security of different companies. So whatever return they are generating, that will be further distributed to the investors. So this is how investment companies are running in the form of collective investment trust, unit trust, or mutual fund in the form of mutual fund. So now the subcategory we can say, and the other category of investment company is the core investment company. Now core investment companies are, they are basically those NBFCs which have at least 90% of their net asset invested into equity share, preference share, bonds, debenture, and other loans of the different group of companies. So these are known as core investment company, क्योंकि उनका जो कम से कम 90% जो asset है वो इन्वेस्ट हुई पड़ी है सिक्योरिटीज में। नाउ नेक्स्ट एनबीएफसी इज माइक्रो फाइनेंस कंपनी। देखो ये सारी क्या प्रोवाइड करी है? फाइनेंस, क्रेडिट। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किस तरह से? माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर कैटरिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ दोज ग्रुप ऑफ पीपल who are having a income of annual income of 60,000 in rural area and 1,20,000 in the urban area. So they are basically catering to the lower middle class of people, and they are providing financial needs
for household purpose, for business purpose, for any educational purpose, but their loan amount cannot exceed for more than 50,000. And the recovery is the important thing. They recover the amount of loan on fortnightly basis, on weekly basis, on monthly basis. And the lending is important. It is without collateral. कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी, बिना कुछ गिरवी रखे इसमें ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं। और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग होगी या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज आर आल्सो नोन एज निधिस। अब देखो निधिस का क्या काम है। निधिस सबसे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन, इफ वी टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ निधि कंपनीज, they are registered under section 406 of Companies Act 2013, and they have been notified as nidhi companies. They are basically working as a, they are basically provide lending, and they lend and borrow money from its member and stockholder. जैसे कि 10-15 10-15 इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बना के, so they can become the member and they can do lending and borrowing. Okay, in the same way they will assist them financially, their members, their subscribers. And the coming toward the next, that is miscellaneous non-banking companies and MNBCs, or they are also known as chit fund. It is very important. Now if we talk about chit fund are those companies which are registered as under section 2 of Chit Fund Act 1982. These are basically in these, there are some fixed number of members which are required to pay a certain periodical installment for a specific duration. Like उन्हें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा देना पड़ता है और एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए देना पड़ता है। और बीच हर एक इंटरवल के बाद एक ऑक्शन होती है, एक ड्रॉ होता है, और जिसका भी ड्रॉ निकलता है वो हमारा विनर होता है, तो उसको अमाउंट जाता है। सो ये एक बेसिकली, नाउ अ डेज वी इन इंडियन फैमिली वी आर फेमिलियर विद किटी। किटी में क्या होता है, सो सारे ड्रॉ निकालते हैं और फिक्स मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट होती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे से होती है और एक अनऑर्गेनाइज्ड वे से, जो हम आम घरों में करते हैं, किट्टी डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या अनऑर्गेनाइज्ड। हाउएवर इफ वी डू इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, दे कैन बी नोन एज चिट फंड। बट तो इसमें क्या है हमारे पास, we should, sometime chit fund are occasionally exploited by the promoter, so it is beneficial for members to invest into, to become a subscriber of a chit fund company which are duly registered. So unregistered chit fund companies are not safe. Now next one is residuary non-benefit companies. Residuary non-benefit companies are those which receive deposit under any scheme in a way of lump sum, in a way of installment, as a contribution or subscription, or by way of a sale of unit. But they do not belong to any above category we have studied, we have discussed so far. So, and residuary non-banking बेनिफिट कंपनीज आर दोस। देखो अब एक और क्लासिफिकेशन है। समटाइम क्लासिफिकेशन आप एनबीएफसी को इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो, लाइबिलिटी के बेस पे, साइज के बेस पे और एक्टिविटी के बेस पे। लाइबिलिटी के बेस पे मींस वो एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, और सम एनबीएफसीज आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, if the asset, the NBFC have a asset which is more than a specified amount, that can be categorized into as a systematically important. And if their asset size is lesser than the specified amount, then it will be categorized as non-specified important companies. और थर्ड पॉइंट है एक्टिविटी के बेस पे। एक्टिविटी के बेस पे मींस
लाइक वी हैव डिस्कस असेट फाइनेंस कंपनी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, कुछ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, निधीज है, चिट फंड है। तो ये एक्टिविटी के बेस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड what do we mean by NBFC deposit taking and NBFC non deposit taking. So NBFC ND means those NBFCs which are not allowed to accept deposit, and the second category of NBFC D that are allowed to accept deposit. So merely out of thousands of NBFCs registered in India, only 54 are NBFCs D. D means which are allowed to accept deposit. So बहुत ही कम 54 हमारे इंडिया में NBFCs हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जनरल पब्लिक से, because for them the regulation of RBI is more stringent, more strict, ताकि हमें हमारी जनरल पब्लिक का पैसा कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यूज ना हो सके और उन्हें किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। सो नाउ we are going toward systematically important and non systematically important। जो NBFCs का असेट साइज 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़, lesser than 500 crore, those are known as non systematically important। And the second category of NBFCs whose asset size is more than 500 crore, they are known as systematically important। So I think the point is much more clear than now. Now on the basis of regulation also, we can categorize NBFCs into different, like some NBFCs are regulated by RBI. These are asset finance company, loan company, investment companies. Some are regulated by National Housing Bank। तो कौन से नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट होती है? जो NBFCs हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है। ठीक है, सम आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो सेबी को किनको रेगुलेट करता है? कौन कौन से NBFIs को रेगुलेट करता है? दैट आर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फर्म, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज। सो सेबी ये NBFIs को रेगुलेट करता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किनको रेगुलेट करती है? निधीज को, चिट फंड को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किनको रेगुलेट करती है? चिट फंड को। और इंश्योरेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? IRDA। IRDA means Insurance Regulatory Development Authority। I think now the point would be much more clear. So we have seen the different type of classification on the basis of liability, size, activity, on the basis of NBFCs, All India Finance Institutions. Now you can see some of the important examples of NBFCs most prevalent in India. We are going toward the next, that is NBFC versus banks. Now here, from the first point, that is definition. So all banks are allowed to accept deposits. They can withdraw, that can be withdrawn through check and or on demand. But NBFCs are those financial companies which are not allowed to accept deposit except some. Now second is scope. The banking institution comes under Banking Regulation Act. However, non-banking finance companies are exempted, are not under the purview of Banking Regulation Act. Major limitation: no non-banking activity are carried, and they cannot provide any checking facility also. So now coming toward foreign investment. In banks, only up to 74% of foreign investment is allowed in case of private sector bank. However, for NBFC, 100% foreign investment can be allowed. Means any foreign company can open their subsidiary as NBFCs with 100% equity. Now next is license. There is strict licensing. However, NBFCs are
do not have much licensing, and they are easier to get registered and as NBFCs. Now regulation. For banks, Banking Regulation Act and RBI Act both need to be followed. Just for NBFC, RBI regulations will be the governance and guidance. Okay, now we are going toward the next difference point, that is payment and settlement. In case of payment and settlement, bank can avail it like RTGS, NEFT. However, NBFCs are not entitled to do this. CRR means cash reserve ratio. It is applicable for banks. However, for NBFC, not applicable. CRR, AR, it is applicable for bank. However, 15% of capital CRAR is required for deposit taking NBFCs. SLR means statutory liquidity ratio. It is applicable for bank, and 15% of SLR is applicable in case of deposit taking NBFC only. In the same way, SAR, FA, ESI is applicable to bank, also applicable to NBFCs. Provisioning is applicable in case of banks and non-banking financial institution. Now, Indian bankruptcy code is applicable in selected NBFCs, and incorporation is required only in banking regulation, and incorporation is done for NBFC as companies under Companies Act. Okay. So there are some practical implication aspect of these which need to be required for academic for any other purpose. With this, thank you so much. For any kind of query, you can contact me here on. Thank you so much, everyone. Have a nice day all.